Right, let's begin with the quizzes. Let me know who can give me the better answers or a quicker answers. Not better, maybe quicker. All right, so here we go. But before starting the class, what's the ritual? To know about the platform. That's right. So we'll know about Swiflearn. What is Swiflearn? Swiflearn is a platform that it says we try harder. So we try harder with the students and let them achieve their dreams. So क्या करना है यहाँ पे टीचर्स को भी वर्क करना पड़ता है. So sad, no? हम सोचते हैं टीचर्स को तो वर्क करना ही पड़ता, but no, teacher also has to work hard. Not hard here, but in at Swiflearn platform, whoever the teacher is here, they have to work harder for the students. तो हमें बहुत ज़्यादा तरीके से डिफरेंट वे से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, समझना पड़ता है और आपको लाके अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है. यू नो, वी आर ऑल्सो लर्निंग along with you guys. Yes, so this is an 100% live and interactive class. तो 100% live and interactive class का क्या मतलब है? जैसे हम यहाँ पर हैं लाइव, तो आप आओ, जल्दी से कमेंट्स करो, मैं आपके नेम्स शूट आउट करूंगी और ऐसे हम बातें करेंगे. वैसे ही क्लास भी 100% लाइव एंड इंटरेक्टिव होती है. ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जस्ट लाइक अ मूवी, पहले ही हो चुका है, देखो और पढ़ लो. ऐसा नहीं है. यहाँ पे टीचर आपके सामने है और आप उनसे वो डाउट उसी टाइम पूछ सकते हो. पिछली बार की तरह नहीं कि हम सोचते रहे ओ मैम ने तो स्कूल में क्या पढ़ाया था हमें याद नहीं आ रहा. तो येस, वी कैन गिव यू दोज क्लासेस देयर. आप आओ, हमसे बातें करो, हमसे समझो, अलग अलग तरीके से बताओ और जो डाउट है वो वहीं पूछ सको. पूछने के लिए हमें को प्रॉब्लम होती है, यार इतने सारे बच्चे हैं, मैं पूछूं या ना पूछूं. होता है ना ऐसा, दिल में कहीं ना कहीं तो आता है. वी नो, राइट? सो उसी लिए हमने एक पैटर्न क्या बनाया, हमने आपको कह दिया कि सिर्फ 6 फ्रेंड्स होंगे, maximum 6 friends होंगे. So in this class, one class, we have only maximum of 6 students that will be studying at a time. This will help the teacher to understand the students' psychology. What are they good at? What are they bad at? Where the improvement is needed. Similarly, the students get familiar. आप आपस में familiar होके friends बन जाते हैं, तो फिर हमारे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, राइट? हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं और इजीली अपने डाउट्स मैम से पूछ सकते हैं. यस, नॉट ओनली दिस, देयर इज एन एकेडमिक मेंटर टीम दैट ट्रैक्स एंड वर्क ऑन द स्टूडेंट प्रोग्रेस. तो क्या करते हैं, आपका ट्रैकिंग शुरू हो जाती है. तो फर्स्ट से आता है तो कोई आपको ट्रैक कर रहा है. ट्रैक इन द सेंस, आपको ये नहीं कि आपको ढूंढने लग जाते हैं. ट्रैक इन द सेंस आपकी एजुकेशन पे ट्रैक करते हैं. सो द मोमेंट आई say we track in the education, that means that they, from the moment you come in the trial class, they get to know how, where you are standing, okay, how you are performing, where you are standing. So how and where दोनों questions के उनको answers मिल जाते हैं. Suppose I am academic team का एक member और मुझे पता चल गया बच्चा यहाँ पर. Now we'll make sure that we are giving the standard to each and every teacher that we have got to know this child has so much of ability to perform और उनको ये चीजें आती हैं. अब आपका काम है उससे ग्राफ को ऊपर लेके जाना. So that is where the teacher starts working harder. तो जो हम पहले बोल रहे थे हम उसको भी satisfy करना शुरू कर देते हैं. And secondly, आप बच्चों को भी पता चल जाता है कि exactly आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है या नहीं. ओके, अब वो कैसे पता चलेगा? जब ग्राफ ऊपर जा रहे हैं तो इंप्रूव हो रही है, जैसे ही ड्रॉप हो रहा है तो बच्चे की इंप्रूवमेंट नहीं हो रही और बच्चे के रिजल्ट्स होमवर्क में नंबर नहीं आ रहे. ऑलराइट, सो दिस इज द वे बाय विच दिस टीम इज एबल टू ट्रैक योर एफर्ट्स, योर वर्क प्रोसेस. Now we also cover syllabus as per school exam schedules. तो school exam से पहले हमें बता दो कि मैम next week मेरा एग्जाम है तो हम वो भी पढ़ा देंगे, तो नंबर उसमें भी अच्छे आ जाएंगे, है ना. And we also handle custom request. Custom request का मतलब क्या है guys? You all know, you are there with me so long. Hi, give me hi and everything. Say me good afternoon at least. आप सब साथ में हो तो. Yeah, by saying handled custom request, we means that whichever topic you think you are not sure, बेशक वो 4th का हो, मैं 6th में हूँ, मुझे बोला नहीं आता, मेरे को पता है 6th में वो यूज होगा, तो लेट मी गो बैक टू द जूनियर वंस. और अगर मैं बड़ी क्लास में 6 में हूँ और मुझे 8th का कोई टॉपिक चाहिए तो आई कैन लर्न दैट टॉपिक ऑल्सो टू गो एंड स्टार्ट स्टडिंग दैट. सो ये कस्टम रिक्वेस्ट हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए पॉसिबल है ताकि उनकी नॉलेज जो उनको चाहिए हम वो उनको जरूर ही पढ़ाएं. जो करिकुलम है वो तो पढ़ाना ही है, राइट? दैट इज नॉट देयर कि हम वो नहीं पढ़ाएंगे, वो तो पढ़ाना ही पढ़ाना है. उसके अलावा बच्चा क्या चाहता है हम वो भी पढ़ा सकते हैं. तो जब इतनी सारी बातें हो, हम सीरियसली पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हो, रिजल्ट भी के बारे में बात कर रहे हो, तो सिंसियरिटी तो काउंट होगी, राइट? आई होप यू ऑल एग्री.
Yes, so India's most sincere learning destination is the platform Swiflearn, and we teach from grades 1 to 10. So everyone who's there 1 to 10, kindly go and subscribe to the channel. YouTube channel पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, राइट? क्योंकि यहाँ पे जितनी टीचर्स आ रही हैं वो सारी आपको पढ़ाने आ रही हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और हम इंटरेक्शन करके वो चीज़ यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, राइट? और एक ट्रायल क्लास भी हम ट्राई करके देख सकते हैं कि जो ये मैम कह रही है वो सब सच है या नहीं, है ना? सो नाउ आई अगेन tell you more about the key features, और अगर आपको डाउट है तो then there is a free trial class, you can go and book there. Alright, so the detailed progress report जो हमने कहा था कि एक statistics graph की तरह आएगा, which goes up and down, and the moment I'm saying down again, because होता है naturally, human है, गलती तो होगी, बच्चे हो, गलती तो करोगे, right? But the moment the graph goes down, we teachers get a red alert, chan, so we know we have to work hard with the student, more harder with the student, and then we have to work. Okay, not only that, there is a SAT exam. SAT exam क्या होता है? अभी हम स्कूल में कितने बच्चों से कंपटीशन करते हैं? 50 या 150, क्योंकि एक क्लास में 50 हो गए तो मे बी 5 सेक्शंस है तो 250 हो गए मैक्सिमम, इफ आई टॉक अबाउट, राइट? तो इतने बच्चों के अंदर रियल वर्ल्ड में कभी इतना कंपटीशन होता है? नहीं। रियल वर्ल्ड में तो कितने सारे बच्चे होते हैं, सबसे कम्पीट करना पड़ता है। एक जॉब के लिए कितने कैंडिडेट्स खड़े होते हैं ना? तो ये 60 एग्जाम्स हमारे को आज से ही उसके लिए प्रिपेयर करने का एक बेनिफिट देता है। तो मुझे अभी ही एग्जाम करना पड़ता है, जिसमें टाइम भी चेक होता है, मुझे पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन में मैं कितना टाइम लगा रही हूँ। द मोमेंट आई गेट टू नो दिस सैट एग्जाम, मुझे ये परफॉर्मेंस बताता है कि मैं कहाँ पर हूँ इस टाइम पे, और मुझे कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फॉर यस, दैट इज देयर, वी गिव यू अनलिमिटेड प्रैक्टिसेस, देयर इज नो लिमिट, यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, एवरी टेस्ट वुड बी चेक्ड एंड द रिजल्ट वुड बी गिवन टू यू, नो डाउट अबाउट इट। ओके, वी ऑल्सो डू द सब्जेक्टिव टेस्ट एग्जाम। तो स्कूल का एग्जाम क्या है? सब्जेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि सिंपल एक क्वेश्चन दे देंगे और आंसर दे देंगे, या मल्टी चॉइस ऑप्शन अब कर दो। स्कूल का एग्जाम तो ऐसे नहीं होता, राइट? स्टेप्स होते हैं, रीजनिंग होती है, उन सब के मार्क्स होते हैं। तो आप कैसे स्कूल में लिखोगे, प्रेजेंटेबल किस तरीके से लिखना चाहिए, हम वो वाले भी टेस्ट करवाते हैं ताकि स्कूल एग्जाम में रिजल्ट अच्छा आए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, और आपको लग रहा है कि हाँ ये सच्ची में अच्छा काम कर रहे हैं। देन प्लीज बुक अ ट्रायल क्लास, गो एंड ट्राई इट, एंड इफ यू लाइक इट देन कम बैक द सेम वे टू दिस वीडियो एंड यू कैन से yes ma'am you were right, and if you think it was not, then also come back and tell us that ma'am it was not up to the mark that you promised. So we'll start working more harder. Okay, so kindly subscribe to the YouTube channel, press on the bell icon so that you never miss any update. So आज की क्विज जैसे मिस नहीं कर पा रहे ना, सबको पहले ही पता था क्विज होनी है, सब्सक्राइब कर चुके थे, तो सारे के सारे बच्चे यहाँ पर आ पाए हैं। बट जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथ, तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, प्रेस ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको एक दिन पहले ही पता चल जाए कि नेक्स्ट कौन सी मैम आ रही है और क्या टॉपिक पढ़ाने वाली है, तो हम उसके लिए पहले ही रेडी रहेंगे, राइट? ओके, सो हियर वी गो विद द टॉपिक रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स विद द क्विज। तो हमारा थोड़ा सा टॉपिक जो लास्ट टाइम का था वो बचा हुआ है। लेट्स डू दैट। बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विद द फन फैक्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड, थोड़ा कोई लिंक बन जाए, ठीक है? ऑल द वे डायरेक्टली क्वेश्चन से तो शुरू नहीं करना चाहिए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फन फैक्ट्स। फन फैक्ट्स क्या हमने करे थे? रैशनलाइजिंग अ फैक्टर। अगर किसी नंबर को रैशनलाइज करना है तो हम कैसे करेंगे, हमने ये लास्ट क्लास में एंडिंग में हमने ये पढ़ा था। अगर नहीं भी आपने लास्ट वीडियो देखी तो अब यहाँ से देखोगे तो भी रैशनलाइजेशन समझ आ जाएगा, और देन वी कैन स्टार्ट द क्विज। ओके, सो बिफोर दैट आई वांट अ हाई फ्रॉम यू ऑल। प्लीज कैन आई गेट अ हाई? गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू फीलिंग? आई होप यू आर सेफ। कुछ तो बोलो, right? Okay, so I'm waiting for your comments and your positive response right now. Till that time we'll start studying as well. Okay, so here we go with the class that says कि हमें क्या करना है कि rationalize करना है। किसी भी नंबर को rationalize करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। What is it? कि जो नंबर है ना, as it is numbers को रखेंगे, we will not change the numbers. अगर a है तो नॉर्मल a रहेगा, अगर रूट में नंबर है तो रूट में रहेगा, no problem, will not change. But the only thing that will change is this positive sign would be converted into the negative sign. Similarly, the negative sign जिसका होगा उसका factor क्या होगा? Numbers will remain the same, whereas the negative sign would be converted into the positive sign. Simple है? पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, और उसके बाद उसको रैशनलाइज करने के लिए न्यूमरेचर एंड डिनोमिनेटर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अदरवाइज यू कैन से दैट जस्ट मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद द सेम नंबर,
दोनों तरीके से बात सही है ना. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेंस यही बनता है. अदरवाइज वी कैन से कि इसी नंबर से उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो. सो वी विल गेट दैट rationalization and the factor for that. So let's go directly to the question that we were discussing in the last class, and this was the question which was given to you. I hope you have done it. Yes, so let me get the answers. कैसे करा ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से कौन बताएगा मुझे कैसे करा ये वाला क्वेश्चन that says rationalizing the denominator. डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 2 plus root 3. So let's understand it's in the form of a plus root b. So how will I do rationalization? कौन सा फैक्टर से rationalize करना पड़ेगा? Anyone who can tell me? Yes guys, I'm waiting for your answer. Let me see who's there with me right now. So what is a? Is 2, that's right. B is, what is b? B is 3 because we are taking the form of root b. Okay, if I am taking just b and I would have just written a plus b, then it would have been root 3. All right, so rationalizations किससे करेंगे? We will multiply it by a minus root b on the top, same with the, जैसे a plus root b होता है तो हम उसको rationalize के लिए a minus root b से multiply and divide करेंगे. तो this is the technique that we generally use. So let's do how are we able to doing this in the question. तो हम ये question में कैसे apply करते हैं? Let's understand that, right? Okay, so let's see how are we applying this logic at the question. It says the least multiplication rational किससे करेंगे? 2 minus root 3. That's right. Great. So अब इसको क्या करते हैं? Multiply and divide कर देते हैं. As simple as that. So we multiplied by 2 minus root 3 upon 2 minus root 3. So when doing that, what happened? क्या हुआ? इसको मैंने जब 1 से multiply करा, I'll get the number itself. That is right. I got 2 minus root 3. So there is no problem in that. But when at the denominator, it became a plus b multiplied by a minus b. So what is this identity? It's equal to a squared minus b squared. That's right. Very good, students. So after doing that, what is a? A is 2. So becomes 2 square minus root 3 square, right? So this becomes 4 minus 3. From here, we got this value directly. That is 4 minus 3. So what is 4 minus 3? That is 1. So we got the value as 2 minus root 3. So when on rationalizing this denominator, the answer that we get is 2 minus root 3. I hope you all are able to solve it. Yes? Great. So let's start the quiz, right guys? Okay, so here we come with the question which is normally, but we can act as a quiz. Okay, so here we go. देखते हैं कौन इसका जल्द से आंसर देता है. Let's see. We have to rationalize the denominator 3 upon root 5 plus root 8. So how will I do it? Yes, who can give me the answer? In this question, when the denominator is in the form of root a plus root b, तो rationalize कैसे करेंगे? Anyone who can tell me how will we rationalize? See, the logic of rationalization is just the same. It does not make a difference that a is in root or not, b is in root or not. So in any way, if one of them is in the root or both of them are in the root, we will do rationalization with only keeping the numbers as it is and changing the positive sign into the negative sign. That's it. Numbers as it is है वो वही रहेंगे, उनमें हम कुछ change नहीं करेंगे. Only will change the positive into negative. So let's see how do we do it. So what will I do? 3 upon root 5 plus root 8 to be multiplied by root 5 minus root 8 upon root 5 minus root 8. Right? So in this case, I'm left with just keeping it outside, not doing anything right now. Upon what will I get? Root 5 square minus root 8 square. This is what will be the question, right? A plus b into a minus b is a square minus b square. So we're getting this. So that comes out to be 3 bracket root 5 minus root 8 upon this will become 5 minus 8. Now the answer I'll get in negative. So that would be the final answer. Let's see. Are we able to get close to that? Yes.
Okay, so on solving that, you will get the answer for sure. And I'm not showing and I'm giving you the answers because you know what's my way is that I want that answers in the chat box. So the moment you are seeing that and you are a little close to it, you can give me in the chat box. Stop there and then just wait and practice. तो comments आने चाहिए chat box में. Present live हो तो chat box में answers आने चाहिए. और अगर बाद में देख रहे हो, I'm not there, I'm so sorry, I'm not there at your time which you wanted me to be there. But अगर ऐसा नहीं है तो I'm there at comments. Go and give it and then we'll tell you that the right answer, is it a right answer or not? All right, so here we go with the next question. You have to rationalize the denominator root 3 minus root 2 upon root 3 plus root 2. तो हम किससे rationalization करेंगे? कौन बताएगा मुझे जल्दी से? In this question, now I have to rationalize the denominator, right? So denominator को rationalize करने के लिए हम numerator को तो देखेंगे ही नहीं. Why do I have to see the numerator? I'll only concentrate at the denominator. That's right, smart students, right? जो चीज जरूरत नहीं है ना उसको ध्यान नहीं देते. Let's keep it side. ठीक है, बाद में देखेंगे. अभी किस पे ध्यान देना है? अभी देखना है rationalization. किसको करना है? Denominator. Let's concentrate on denominator. That's it. Numerator को अभी हम भूल जाते हैं. तो अब denominator देखा तो हमारा आया root a plus root b, right? अब इसको rationalize करना है तो मतलब क्या करना होगा? root a minus root b से करना होगा. As simple. ये तो हमें पता ही है, सिर्फ positive sign को negative में कर देंगे, right? So on doing that, what do I get? root 3 minus root 2 upon root 3 plus root 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट 3 माइनस रूट 2 से करेंगे, राइट? इसी से ही करने को हमने कहा था ना कि नेगेटिव से करेंगे. जब हमने अब करा तो हमें ये पता चला कि आइडेंटिटी ऊपर क्या बन रही है, एज इट इज सेम है. तो ये क्या बन रहा है? रूट 3 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर. दैट्स राइट, अपॉन root 3 square minus root 2 square. Don't ask me now कि कैसे होता है. No, I'm not saying that. You can ask me. I'm there to tell you. But just in a way that I wanted to know, are you there or not? And you have understood this or not. So for this, let me tell you the identity. It's a plus b into a minus b. That comes out to be a square minus b square. So this is what that we get and we are using it. We have done it in before question and we are doing it again. Whoever has joined late will understand this, right? Okay, and on solving this, what do I get? I get root 3 minus root 2 whole square upon 3 minus 2. That comes out to be 1. So the answer is root 3 minus root 2 whole square. Let's see who all are able to get this answer. Anyone? Yes? Great then. Well done. All right. So did you know the term surds were tracked back? So it was referred to as rational numbers and irrational numbers which are audible and not addictable. So ऐसा क्या होता था कि हम जोन से नंबर्स को ऑडिट कर सकते थे, ऑडिटेबल होते थे, और जोन से नहीं होते थे उनको हम रेफर करते थे रैशनल एंड अनरैशनल नंबर्स से, और उससे ही सर्च आया. Alright guys? Okay. Now question of the day. So why are irrational numbers? Where are they used? Why are we using? Why are we studying? So at this platform, whoever is there right now, कभी आपने ये चीज सोची है? कभी भी नहीं सोचूंगी. I'm very sure. हम बस पढ़ते रहते हैं, okay, टेक्स्ट बुक में है तो पढ़ना है, but real life में where are irrational numbers? So this is what is there. We teach the students that what is the real life application. हम पढ़ी क्यों रहे हैं? This can be only taught at the platform Swiflearn. That's right. I'm very sure कि कोई और प्लेटफॉर्म पे ये चीजें नहीं सिखाई जाती है, आपको कभी भी नहीं पता चलेगा. कभी सोचा था irrational numbers पढ़ते हैं, real numbers पढ़ते हैं, हम negative numbers integers पढ़ते हैं, तो क्यों पढ़ते हैं? जरूरत ही क्यों है? तो जब हम उन चीजों को ये समझ लेंगे कि हमें कहाँ जरूरत है तो ऑटोमेटिकली हमारे में उस टॉपिक से रिलेटेड इंटरेस्ट बन जाएगा. सो दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाई आर इरैशनल नंबर्स यूज्ड फॉर? तो वेयर आर दे यूज्ड, व्हाई आर दे यूज्ड? सो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू टेल मी. ऑलराइट. Hi Drishti, I'm so excited to see you here. That was great and thanks for chatting with me and being there with me. All right, so now you have to tell me why and where is irrational numbers used. कहाँ use करते हैं हम irrational numbers? Anyone who can give me? Real life में हमने root 2 सबसे पहले कहाँ सुना था? Anyone who can see कि root 2 कहाँ सुना था हमने? और जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करे तो हमें लगा, ओ ये तो root 2 आ गया, कैसे आया? Alright, so simple thing जब होती है, हम जब किसी भी ट्रायंगल की बात करते हैं, right? तो हमें पाइथागोरस थ्योरम हमने तो पढ़ी हुई है कि एक राइट एंगल होता है, अगर बेस पता है 1 हाइट
परपेंडिकुलर पता हाइपोटेन्यूज जो ये वाला चीज है ये हमें कैलकुलेट करनी हो तो हम उसका वैल्यू क्या निकालते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. ये तो हमने सुना था ना. ये आ गया 2 तो जिससे हमारे को वैल्यू AC स्क्वायर की मिलती है. तो AC से हमारे को वैल्यू क्या आती है √2. तो यहाँ से हमें √2 की वैल्यू आ जाती है. ऑलराइट, क्लियर गाइस. सो ऐसे ही कई क्वेश्चंस में जब हम आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, जब बिल्डिंग्स बनती हैं तो किस एंगल पे हमारी चीज होनी चाहिए, या वॉल्स 90 डिग्री पे हैं तो क्या स्लोप है या नहीं है, स्लांटिंग जो हम रूफ की वो बनाते हैं वो किस एंगल पे होनी चाहिए, या कितनी लॉन्ग होनी चाहिए, कितना वो सपोर्ट ले सकती है. दिस जब नेचुरली हम बिल्डिंग्स बनाना शुरू करते हैं उन चीजों में भी ये इरेशनल नंबर्स की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है. तो दिस इज वेयर द रियल लाइफ एग्जांपल इज. ऑलराइट, और बहुत सारी जगह होती है, मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया है तो बाकी एग्जांपल्स आपको देने हैं कमेंट्स में. लेट्स सी कौन नया आइडिया निकाल कर आता है और रियली देखता है कि रियल लाइफ में कहाँ होता है. Alright, so today we'll start with the objective जो हमने कहा था, quiz, fun, concept based questions, subjective questions, and here we go with the quiz. Everyone ready? Yeah, excited? Okay, so here we go with the concept based questions. You have to fill in the blanks. Real numbers comprises of dash and dash. Okay, who will give me the answer? Yes guys, here we go with the quiz and let's see who can give me the answer. So the first question is real number comprises of dash and dash numbers. Real numbers की categories में दो categories आती हैं. कौन कौन सी होती हैं? Who can give me the answer? Yes, real numbers comprises of, it has two numbers in the category. कौन कौन से होते हैं? Yes, yes, yes. Think quickly. कौन से हो सकते हैं guys? Which can be the real numbers which are there? Yeah, I can see you there. You can tell me in the comments box. Chat box, right? Right now it's chat? Okay. Alright, so chat box में मुझे answers मिल रहेंगे real numbers के अंदर क्या क्या आते हैं. Yeah, I got one answer. It says rational numbers. Okay, what's the other one? Whoever can give me? Yes, that's right. So it's a rational number and irrational numbers that come together and make a real numbers. Great students, let's move to the next one. Let's see. Square roots of every negative number is and dash number. Square root of every negative number. Square root of every negative number is a dash number. Anyone who can give me this answer? Who can tell me square root of every number, every negative number is an dash number? Let's see. I'm okay, giving you a couple of seconds. Let's see who can give me. Okay, let's see. All right. No? Not a problem. Let's understand. If we don't know, we'll study. Alright, so it's an imaginary number. Real life में कोई negative number का हम root नहीं निकाल सकते. वो एक imagine करते हैं. So imaginary world, like a fairy tale, like gangsters are there, a lot of them. They are fighting fairies and the devils are fighting. तो कुछ imaginary world हो रहा है, right? तो वैसे ही जब negative number आ जाता है तो imagine करते हैं कुछ ऐसा world होगा, but ऐसा हो नहीं रहा actually. That's why we call it imaginary numbers. Alright, okay. So here we go with the next one. The division of a rational number by a non-zero rational number is always a dash number. Let's see who can give me the answer. I'll repeat the question. Don't worry, I'll go slow and study. Okay, so just read it, understand, and then give me the answer. The division of a rational number by a non-zero rational number. तो एक rational number है, उसको divide करना है एक non-zero rational number से. What will we get? What type of number will we get? Yeah, who can give me the answer? You can write it here in the chats, Judy. The chats where you're asking me where to write it, you can just write the answers here in the chat itself. Alright, so what will be the answer? The division of a rational number by a non-zero rational number is always a dash number. So what is it? कौन सा number होगा? Yes, yes. It will be a rational number. That's right. See, what is happening is कि अगर किसी भी rational number, ठीक है, rational number कोई भी लेना, okay, I'll take 1/2, a rational number. It's a rational number or it's not a rational number? It's a rational number, right? Okay, so on doing this, मैं इसको divide कर रही हूँ किसी और rational number से. Okay, let me divide it by 2. Now, alright, you want it to be more simple. Let's do it a simple one. Rational number 4/1 है. Okay, that means 4 है. Simple. इसको मुझे divide करना है 2 से.
That means 2 by 1 is also a rational number. Let's simple as that. So that becomes 4 to be divided by 2. That becomes 2. And which I can write 2 by 1. So what am I getting? I am getting a rational number. Alright. So that is what a division of a rational number by a non-zero rational number will give us a rational number. Alright. Okay. Hi Narula. Happy to see you. Finally back. Alright. I missed you. Alright, so here we go with the fourth one. Let's see who can give me the answer now. A non-terminating and non-recurring decimal is a dash number. क्या होता है? Non-terminating and non-terminating and non-recurring decimals are dash number. What are they? Let me see. What are the answer? Who is giving me the answer now? Yeah. A non-terminating and a non-recurring decimal is a dash number. कौन सा नंबर होगा? I think it will be some number which we can think of. Just take a number. Example मैं actually example दे के बताना चाह रही थी, but I don't want to tell you. Let me see what exactly what's in your mind. Then I'll tell you how to proceed. ऐसे question को कैसे solve करते हैं वो भी हम सिखाएंगे. Okay? जब ऐसा कुछ question होता है ना, हमें नहीं समझ आता कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम एक example लेके करते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग. तो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब वो एंड नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग मतलब वो रिपीट भी नहीं हो रहा. तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है? तो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर्स, क्योंकि जब वो टर्मिनेट हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, तो रैशनल ही हो जाएंगे. जब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, देन वी आर ओनली लेफ्ट विद द ऑप्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स. तो ऐसे ना लॉजिकली हम एक चीज से एक को लिंक करते हैं, उसको चेन बना के ओवरऑल सोचते हैं उसके टॉपिक कौन सी कैटेगरी आ सकती है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओके, सो हियर वी गो without actually doing division, whether the following are terminating or non-terminating decimals. So who will tell me? Let's do with the first one. 17 by 50. So is it a terminating or it's a non-terminating? 17 by 50. So हम किसको देखते हैं first of all? Anyone who can tell me which do I look? What do I look? I look at 17 or 50. किसको देख के पता चलता है कि terminating है या नहीं है? Yes, I can see you all there. Just quickly tell me. किसको पता देगा 17 से या 50 से? किससे पता चलेगा कि वो terminating है या नहीं? Yes, that's right. We'll look at the decimal. Very good. So after looking at the decimals, we'll get to know it's terminating or non-terminating. और हमारा terminating और non-terminating decimals का एक था. क्या था formula? Anyone who remember what's the formula? Yes, 2 to the power m into 5 to the power n. That's right. So can I write 50 in terms of these? Okay, you said yes, it is terminating. Okay, 50 से. Okay, let's see. 50 को हम करते हैं. Okay, I got one answer from Gaming S. What's your real name? Can I know that? All right, 5 into 10. What is? I can write 10 as 5 into 2. So yeah, it's only in the terms of 5 and 2. So yes, it is terminating. Very good. Moving on to the next one. 7 by 8. Is it terminating or non-terminating? Let's see. Who can give me the answer now? 7 by 8. So I'm removing the formula now. Alright, let's see who can give me the answer. 7 by 8. That's right. We'll look at the denominator. It's 8. How do we write 8 as? 2 into 2 into 2. That's right. But now I don't have 5. So will it be a terminating or non-terminating decimal? Okay, Shubham, great. Thanks for giving me the formula. That's right. Okay, now tell me that is this a terminating or a non-terminating? What is it? अब तो मेरे पास 5 नहीं है ना, क्योंकि मैंने तो बोला था 2 to the power m या 2 to the power n, 5 to the power m, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, right? But अब तो मेरे पास 5 नहीं है. Still it is terminating or not? Yes, that's right. Well done, Shubham. Yes, it is terminating because I can write it and multiply by 5 is equal to 1, where I can write it at 5 to the power 0. So just say it terminating form में बन जाएगा. Great. Moving on to the next one. 73 by 72. Is it terminating or non-terminating? Now I'll not solve it. I will just want the answer directly. 73 by 72. Is it a terminating or non-terminating? Anyone who can give me the answer? 73 by 72. So is it a terminating or not? Okay. Let's see. What we will do? We will do
72. We'll do the LCM method like we do it. 2, 3s are 6 and 6 are 12. So when the moment it comes 3, I don't need to do it. I know it will be 12, but it's 3. So will it be terminating? No, because it's getting multiplied by 3 in this case. Can you see it? All right. So whenever it has to be in the form of 2 to the power n and 5 to the power m. Nothing else. No 3, no 4, no 5. No, you cannot take any other prime numbers in this. So moment it is 3, so it is non-terminating. All right. Great. Moving on, let's see the answer. It's terminating, whereas this question, it says non-terminating because it comes 2 times. All right? Okay, great. So yeah, now comes the next question. Give me 5 rational numbers between 1 and 2. Let's see who can give me the answer quicker. 5 rational numbers between 1 and 2. You don't need to be sorry. We are here to study, right, student? Yeah, don't need to be sorry at all. All right, so let's do and try. I'm very happy you are trying, so no sorry at all. Just keep on trying and learning from your mistakes. यहाँ पे mistake करेंगे तो अच्छा है ना? School में तो नहीं कर रहे जहाँ number लगने हैं, right? यहाँ पे mistake करने में क्या है? यहाँ तो हम सीखने ही आए हैं, तो it's not a problem. So don't need to be sorry and don't feel ashamed of or being little more reserved कि मेरे को answer नहीं देना चाहिए, मेरा गलत होगा. क्यों? सीखने ही तो आए हो, बोलो, अच्छे से बोलो. Okay, दिल खोल के बोलो. All right, so give me 5 rational numbers between 1 and 2. Okay, so I got 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6. Okay, let's see, Shubham. All right, that was a great trick. 5 hai, so 5 plus 1 karenge, that becomes 6. Now, what do? Is I will do 6 se multiply and divide the both of the things. Okay, on doing that, what do I get? 6 se divide karne pe, I'll get 6 by 6 and the last one will be 12 by 6. All right. Now on doing that, I'll get 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6, 11 by 6. Now I know I can simplify this. I can simplify this. I can simplify this. And similarly, we'll get the answer. All right. So whatever answer you're getting, that's good. And this is also the right answer. Okay, so easy one. जितने चाहिए उसमें simple add 1 कर दो और उसके बाद numerator और denominator जो numbers है 1 and 2. इनको क्या करो 6 से multiply and divide कर दो. That's it. So now you get the fraction 6 by 6 here and you get 12 by 6 here. तो उसके बीच में simple 7, 8, 9, 10, 11 हो गए. ये 5 आ गए. As simple as that, right? Okay, great. Now moving on to the next one. So this is what they have done. You can see it. So on doing it, you will get 7 by 6 और ये 4 by 3 वही जो मैंने कहा था कि हम इसको simplify करेंगे because we have to satisfy 2 properties. One is it should be in the form of a by b where b is not 0. both हम satisfy कर ही रहे हैं. Second कोई common factor भी नहीं होना चाहिए. अगर मैं उस तरीके से आंसर छोड़ती तो मेरे मार्क्स कम आ जाते. कटते, मैम काटेंगी नंबर. यहाँ पे ऐसे करेंगे तो चांस ही नहीं कट करने का. All right? Okay, so here we go. Find 6 rational numbers between 3 and 4. Let's see. You have to give me 6 rational numbers between 3 and 4. Who can give me the answer? Let's do a easier one, right? अब 6 हो जाए 7 हो जाए तो हमें लगेगा नहीं नहीं अब तो गलत हो रहा है, right? So let's do this one. Let's see. 6 rational numbers between 3 and 4. So what will I do? Yes, guys, quickly give me the answer. Now, till now, I'm getting a lot of answers from Shubham, so he's taking a lead. You all can try and give me the answers so that I can take your name out and you can also give me the answers and we can understand you are there with us or not. Okay, so let's see. Whoever has joined it right now, and if you think you're missing something which you could not join before, पता नहीं था पहले. क्यों नहीं पता था? क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया था, बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया था. सो काइंडली गो राइट नाउ. 1 सेकंड के लिए मैं पॉज ले लेती हूँ. नॉट अ प्रॉब्लम. गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस ऑन द बेल आइकन एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ताकि नेक्स्ट टाइम आप ये ना करो ओ नो मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे को तो क्विज में पार्टिसिपेट करना था, शुभम की तरह मुझे भी नाम आगे आना चाहिए था, मैं आपको मेरा नाम भी लेना चाहिए, राइट? सो काइंडली गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस ऑन द बेल आइकन एंड देन come back and give me the answer for this one. So it says you have to give me 6 rational numbers between 3 and 4. So I got 3.2, 3.3, 3.4. All right, great. Shubham, you have done it in decimals. That's right. But as if we want a rational number in the form of a by b. Okay, decimal numbers nahi bole. Okay, you are giving the right answer. That's a clever approach, smart approach, I would say, rather. So that's a smart approach. But right now we need in a form of
Thanks, Shubham, for listening to me and subscribing it so that I can see you next time too. All right, so here we got A as 3, B as 4, and what do we need? We need 6. So 6 plus 1 कर देते हैं, simple 7. 7 से multiply, divide, 7 से multiply or divide. So what do we get here? 7 3s are 21 by 7. I hope make calculation आती है. 28 by 7. और बीच में क्या आ जाएगा? 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7. Sorry, yeah, 25 by 7, 26 by 7, 27 by 7. So here we go. We got all the 6 ones. Great. All right, moving on to the next one. 22 by 7, 23 by 7, and here we go with the answer. You can go and check. Ma'am, sahi padha rahi hai, right? Okay. Now, moving on. Insert a rational and an irrational number between 3 and 4. अब प्रॉब्लम तो नहीं आ रही. सोचो. रैशनल नंबर्स तो मुझे पता है. Irrational numbers कैसे करेंगे? Who can give me the answer for this question? I can see you guys quickly give me the answer. You have to tell me a rational number and an irrational number which comes between two numbers, that is 3 and 4. Okay, let's see. A is 3, that's right. B is 4, that's right. Rational number calculate करने के लिए हम क्या करते हैं? Anyone who remember कि हमारा क्या फॉर्मूला होता है रैशनल नंबर जो हमारे को बीच में आ जाए उन दोनों के? लेट्स सी कौन बताएगा? ओके, सो ए है, बी है, रैशनल नंबर निकालना है तो दैट कम्स ए प्लस बी बाय 2. सिंपल, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, सिंपल एज दैट, मिडिल आ गया, राइट? ओके, सो 3 प्लस 4 बाय 2. सो 3 प्लस 4 क्या होता है? 7. Okay, 7 by 2 is a rational number that comes between 3 and 4. All right, now you have to tell me a irrational number. Irrational number कौन सा होगा? See, we remember अगर लास्ट क्लास में हमने ज्वाइन करा है, लास्ट वाली वीडियो देखिए तो हमने irrational number निकालने का एक मेथड करा था. In case you don't know, because I haven't got answer so far, so maybe you are a little stuck. So I'm understanding it and I'm giving you the solution. क्या करना है? Irrational numbers के answers के लिए root 13. Okay, let's see. Irrational numbers का answers कैसे करते हैं? Simple है. पहले हम A into B निकालेंगे. We will multiply. What do I get? 4 3s are 12. ये तो सबको इजीली पता चल गया. 12 को हम देखेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. Is 12 a perfect square? Is it a perfect square? No, it is not. किसी भी नंबर को अगर हम रूट निकालते हैं 12 का तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा. इन दैट केस जब मेरे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो सिंपल इसका रूट ए बी जो होता है वो बन जाता है हमारा इर्रेशनल नंबर. सिंपल एज दैट. क्या करना है? रैशनल के लिए दोनों को ऐड के 2 से डिवाइड, इर्रेशनल के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके सिर्फ फर्स्ट एक ही रूल है चेक करना है कि इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. अगर वो नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारा वो इर्रेशनल नंबर बन जाता है एंड दैट विल बी रूट ऑफ 12. सो दिस विल बी आवर आंसर. लेट्स सी, मैम सही पढ़ा रही है. All right, so the answer is that we multiply. We know it's not a perfect square. In that case, it becomes root of 3 into root of 4. That becomes root of 12. Now, 12 एक number है जिसको मैं 4 और 3 के साथ कर रही हूँ, तो I can write 12 as 2 root 3 also. That's not a problem. Okay, so answer ठीक है, उसको और simplify करना था. All right, great everyone. Okay, moving on to the next one. Non-terminating and non-recurring decimals are called rational numbers. Is it true or is it false? Okay, let's see. Yes, guys, what's the answer? Non-terminating and non-recurring decimals are called as rational numbers. Is it true or is it false? Let's see. I can see you also there, present there. Quickly tell me the answers. So many of you are there and we are not getting any answers. क्या हो गया? All right, I hope you were attending and seeing all the videos. I'm repeating it again once more. जो नए बच्चे आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि oh no, हम कहाँ से शुरू करें, कब हम अटेंड करें, तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, प्रेस आइकन को क्लिक करो ताकि आपको पता चले कि क्या करना है और कब ये क्लास शुरू हो रही है. ओके, और आप यहाँ पे आके क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो और हम आपका नेम भी लेंगे. I'm there waiting for you. और यहाँ पे हर एक टीचर आपकी वेट करती है. ओके, आप आके अच्छा जल्दी से सीख सकते हो. different ways जो हम बोलते हैं वो भी यहाँ पे सीख सकते हैं. Alright, so terminating, non-terminating decimals are called rational numbers. That's false. It comes in the category of irrational numbers.
क्योंकि टर्मिनेट हो जाएंगे तो रैशनल हो गया ना, आंसर तो मिल ही रहा है, एंड हो रहा है। बट जब एंड नहीं होता और वो नॉन रकरिंग हो या रकरिंग हो, रिपीट करे या ना करे, रिपीटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा तो वो रैशनल नंबर्स में नहीं आएगा, इरैशनल में आएगा। अगर वो टर्मिनेट हो रहा है तो वो रैशनल नंबर्स में आएगा। खत्म, आंसर मिल गया रैशनल। खत्म नहीं हो रहा, आंसर नहीं मिल रहा, तो वो इरैशनल। ऑलराइट, ओके ग्रेट। मूविंग ऑन, विच ऑफ देम इज ग्रेटर? आंसर केम डायरेक्टली, ओके। द क्वेश्चन इज 6√3 and 5√2। इनमें से आपको मुझे बताना है कौन सा ग्रेटर है। इट्स नॉट अ आंसर, ओके। यू हैव टू टेल मी 6√3 इज द क्वेश्चन। I'll write it here, 6√3 and 5√2। इनमें से कौन सा ग्रेटर है? Okay, how do we know which is greater? Anyone who can tell me how do we know which is greater? Yeah, that's right. हम 6√3 को कैसे लिख सकते हैं? ब्रैकेट में ले जाके 6 into 6 into 3, राइट? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही 5√2 है तो हम ब्रैकेट में ले जाएंगे 5 into 5 into 2। सो है तो मुझे इसका तो इजीली पता है 50। इसको कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ क्या आएगा। या व्हाट्स द आंसर? इज इट, व्हाट इज इट? 6 6 या 36, 36 into 3, व्हाट इज इट? 108। कौन सा बड़ा है? 108 बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर। सो द राइट आंसर इज 6√3 इज ग्रेटर देन 5√2। ऑलराइट, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ विच ऑफ देम इज द स्मॉलेस्ट रियल नंबर? अब बहुत इजी है, आपको जहाँ पे 2 दिए हुए थे आपको ये बताना था कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है और आपको ये बताना है कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है। लेट्स सी हु कैन गिव मी द आंसर क्विकर। यस यस यस, जल्दी से सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ऐसे ऐसे सबको सॉल्व करो। जिसका सबसे छोटा आता है रूट के अंदर, दैट विल बी द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट रियल नंबर। सो व्हाट्स द आंसर गाइस? ओके, टेक योर टाइम, a little more seconds. I'm waiting. Let's see. Yes. All right, I'm so sorry. Blue color is not visible. I'll do it with white for sure now. All right, so it's 6√2. So what do? I'll take 6 inside 2 times because वो root में है and into 2. इफ यू डोंट रिमेंबर, ये मैंने क्लास में भी बोला था बच्चे कि 6 है तो हम उसको √6 into √6 लिख सकते हैं, into √2 लिख सकते हैं, राइट? तो इसीलिए हमने पूरे रूट में लिख लिया। ओके, नाउ जो हमने लिखा इसको लिखा √36 into 2। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आया? 6 2 12, 1 कैरी 2 6 1, 72। सिंपल, हमने जैसे मेंटली करते हैं हमने कर लिया, ये 72 आया। दूसरे में क्वेश्चन पे जाते हैं, 2√6। तो नाउ इट बिकम्स रूट के अंदर 2 into 2 into 6, जो कि आ रहा है 4 into 6, 6 4 are 24। तो ऑटोमेटिकली जब रूट में बड़ा होगा तो उसका आंसर बड़ा आएगा, रूट में छोटा होगा तो उसका आंसर छोटा आएगा। तो अभी तक तो ये छोटा आ रहा है। अब आपको यही चीज इन दोनों से कंपेयर करके मुझे फाइनल देना है। ऑलराइट, द स्मॉलेस्ट वन यू आर सेइंग इज 2√3। लेट्स सी, इज दैट राइट? Yes, very good, Shubham. That's right answer. It's 2√3 is the smallest among all these. Great. Moving on, state with reason which of the following is a surd and which is not. तो मुझे reason भी पता होना चाहिए. Okay, so you have to tell me, is this a surd or is it not? So is it coming to the surd or it is not coming to the surd? Root of 27. Is it a surd or is it not? You have to tell me true or false, yes or no, and what's the reason behind. Let's see who can give me. Is root of 27 a surd? True or false? Yes, guys, what's the answer? Okay, let's see. Yes, it is a surd. Very good. So it is, we will multiply by 3 into 3 into 3. That comes out 3 1 out, 3√3. So we are getting answer in any way end as √3. If you want, I can do it once again. So 3 3s are 9, 9 3s are 27. Like this. I know this can come out. This comes 3√3. So end of the day root में answer आ रहा है, irrational number है, तो it is a surd of the power of 2. Okay? Alright. Moving on to this one, is it a surd or it is not a surd? Root of 225 to be multiplied of root of 4. Is it a surd or it is not a surd?
सर्ट का बच्चा ये मतलब होता है कि जब हम इस रूट को सॉल्व करते हैं, अगर डायरेक्टली मुझे एक आंसर मिल सकता है विच इज नॉट अ रैशनल नंबर, एक इरैशनल नंबर मिलेगा तो वो सर्ट होगा, लेकिन उस ऑर्डर का। मैं डायरेक्टली 27 को सर्ट नहीं बोल सकती। 27 इज अ सर्ट ऑफ द पावर ऑफ 2। ओके, जब मैं थर्ड का क्यूब रूट निकालती हूँ तो मेरे को आंसर 3 मिल रहा है, राइट? तो वो सर्ट कैटेगरी में आएगा नहीं, क्योंकि वो थर्ड पावर पे नहीं एप्लीकेबल कर रहा, बट सेकेंड पावर पे वही नंबर सर्ट बन रहा है। तो वील जस्ट अंडरस्टैंड कि किस पावर पे वो सर्ट है या नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अपने बेसिक लैंग्वेज में उसको डिवाइड, उसका फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अगर एंड में हमारे को रैशनल नंबर मिल जाता है तो इट्स अ सर्ट, अगर नहीं मिलता तो इट्स नॉट अ सर्ट। ऑलराइट, इरैशनल नंबर मिल रहा है तो वो सर्ट होगा, नहीं तो नहीं। इसको करने के बाद इट्स द सर्ट, इट्स नॉट अ सर्ट। ओके, सेइंग इट्स नॉट अ सर्ट बिकॉज योर सर्ट इज गेटिंग रिमूव्ड, रूट नहीं आंसर नहीं आ रहा, डायरेक्टली एक रैशनल नंबर में आंसर आ रहा है। So yes, that's right. So it's not a cert. Very good. That's right. Okay. Now rationalization method में आपको ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके बताना है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या आंसर आएगा। Let's see. You have to rationalize 1 upon root 2 plus 1 plus 1 upon root 3 plus 2 plus 1 upon 2 plus root 3. Let's see who can give me the answer. जल्दी से करें। ओके, इन दैट प्लेस हम इसको रैशनलाइज किससे करेंगे? whoever is new, जिसको नहीं पता वो मेरे साथ सॉल्व कर ले, और जिसको आता है वो जल्दी से सॉल्व करके आंसर दे दे, ठीक है? ऑलराइट, सो 1 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1, तो हम किससे रैशनलाइज करेंगे? रूट 2 माइनस 1 से, राइट? हम उसको दोनों से करेंगे। ओके, सो इन दिस केस इट विल बी रूट 3 माइनस रूट 2 से अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 से करेंगे। In this case 2 minus root 3 से हम rationalize कर देंगे, right? On solving this I'll get root 2 minus 1 upon 2 minus 1 plus root 3 minus root 2 upon 3 minus 2 plus 2 minus root 3 upon 2 का square, that is 4 minus 3। तो end of the denominator में 1 1 आ रहा है तो cancel हो रहा है ना? तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पर? root 2 minus 1 plus root 3 minus root 2 plus 2 minus root 3, root 3 cancel, root 2 cancel, 2 minus 1, answer 1। so मेरा तो आंसर 1 आ रहा है, आप लोगों को क्या आ रहा है? Let's see, क्या हमारा आंसर सही है? Yes, that's right, the answer is 1। सिंपल रैशनलाइजेशन करते हैं, जब ऐसे देखते हैं ना तो मेरे को लगता है ओह इन सबको कैसे सॉल्व करेंगे, बट जैसे ही हमने करा उसको रैशनलाइज, उसकी आइडेंटिटी निकाली तो एक आंसर आ रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है तो आंसर आएगा, बेशक रूट्स में आएगा या नहीं आएगा, बट आएगा, राइट? ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a and b if 2 root 3 plus 3 root 2 upon 2 root 3 minus 3 root 2 is equals to a plus b root 6। अब देखते हैं कौन आंसर देता है। ऑलराइट, ग्रेट शुभम, वेल डन, आई एम वेरी हैप्पी। और जो बाकी बच्चे कहाँ हो सारे, जल्दी से आंसर दो। ओके, गलत भी है, 0 भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आंसर्स तो दो। और यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। तो हम किससे रैशनलाइज करेंगे? नेगेटिव को पॉजिटिव से। तो हमारे पास आ जाएगा 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, अब तक तो इतना आ गया होगा, राइट? 4 इंटू 3, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2, इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है? तो अब क्या आ रहा है ये, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 प्लस 2 इंटू 2 रूट 3 इंटू 3 रूट 2 प्लस 3 3 9, 9 इंटू 2 9 2 18, डायरेक्टली हम भी लिख सकते थे, बट 12 माइनस 6, नहीं 4 3 12, हाँ 12 माइनस 6। ऑलराइट, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे से यहाँ से क्या वैल्यू आ रहा है बच्चा? ये देखो, हमारे को यहाँ पे जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास रूट 6 ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा, और जो नॉर्मल नंबर को हम सॉल्व करेंगे तो वो जो नॉर्मल नंबर आएगा वो हमारा a हो जाएगा। तो इससे हमारे को मिलेगा a प्लस b का रूट 6 का वैल्यू से a और b की वैल्यू आ जाएगी। सो एनीवन हु इज एबल टू कैलकुलेट सो फार, व्हाट्स द आंसर? यस, okay, so what did you get? The answer of A is minus 5. Very good. And answer of B is minus 2. All right, guys? Okay. Now, what have we learned today? We have done the quizzes, we have understood the concept, and we have also done the subjective questions. जो last के जो बड़े-बड़े थे जिसको हमें solve करना पड़ता है, quickly answer नहीं दे सकते, that are the subjective questions. All right? Okay.
Thank you so much for being connected with us and giving the right answers and even not still being connected and understanding how to solve it so that later on आपको क्लास में प्रॉब्लम ना हो. समझना बहुत ज़रूरी है, बातें करना बहुत ज़रूरी है और उसको absorb करना और next क्लास में आना उसके prepared होके, that is very important. So kindly subscribe to the channel, press on the bell icon so that you never miss any update. And you guys, I don't want you to mix the next topic. So next topic एक altogether नया chapter होगा, नई चीजें होंगी, उसके बारे में हम starting से पढ़ेंगे. और अगर उसमें आपने स्टार्टिंग से ही सीख लोगे तो एंड तक आपको पता चल जाएगा कि क्या है. और जब हम क्विज़ेस लेकर आएंगे तो हम ऐसे ही और पढ़ सकते हैं, राइट? Yes, so I'll be waiting for you in the next session. अब ये बोलोगे मैम नेक्स्ट सेशन है कब, ये तो बताया ही नहीं. So for that only I'm saying you need to subscribe and press on the bell icon right away, क्योंकि इसके बाद जब भी मेरा नेक्स्ट जब भी आना होगा तो उससे एक दिन पहले आपको अलर्ट आ जाएगा और आप उस टाइम पे रेडी रहना. Alright, till then take care guys, be safe and have fun. Bye.